चलिए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे बताइए तो। यस प्लीज, कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास में? एनीवन? बीएसबीएससी आई थिंक स्टार्ट करने वाले थे। यस, चलिए डिमॉड्यूलेशन वगैरह हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। बीएसबीएससी लिखिए, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ओके। लिखिए, this is your m of t, just multiply with the carrier frequency c of t, and whatever your output y of t, this is mt into ct. This is called DSBSC equation. Let c of t equal to ac into cos of omega ct. Let m of t having the frequency Fourier transform is m of f minus fm. This is plus fm. This is zero frequency. Let this is m of f. Now, so m of t, y of t equal to what? M of t into ac into cos of omega ct. So its Fourier transform is what? So you can directly write here Fourier transform ac by 2 m of f minus fc plus m of f plus fc. Got it, my friends? Is it clear? Is it clear? Please write each and every one. Clear or not? So this is ac by 2 m of f minus fc plus m of f plus fc. Now you can write here. So spectrum of DSBSC is 1 at f equal to fc, this is fc plus fm, this is fc minus fm, another is fc minus fc plus fm, this is minus fc minus fm, this is minus fc. So your bandwidth is what? Twice of fm. Your bandwidth is what? Twice of fm. This is the spectrum of DSPSC. Is it clear? So bandwidth, however, is twice of fm. So bandwidth is same. Now, there is no any carrier. Carrier power is suppressed here. So total PT equal to what? Total sideband power. Because there is no any carriers. So carriers is suppressed here. That is nothing but PT equal to total sideband power. So efficiency, power efficiency is what? Total sideband power upon PT into 100%. So this is equal to 100%. So power efficiency is achieved in the case of DSBSC is 100%. 100%.
Got it, my dear friends? Is it clear? Please write each and every one, clear or not? So this is called power efficiency. And power efficiency is always 100%. Always kitna? 100%. However, bandwidth is what? Twice of FM. And AM bandwidth is what? AM bandwidth is also twice of FM. But in this case, PT is equal to what? PC1 plus beta square by 2. There is a carrier powers. But here carrier is suppressed. That's why this is called DSB-SC. That's why this is called DSB-SC. क्वेश्चन लिखिए, ये कैरियर ऑफ CT इक्वल टू 20√2 cos pi into 10 to the power 5t is DSB modulated by a message signal m of t equal to 2√2 cos pi into 10 to the power 3t. Find total power efficiency, upper sideband power, lower sideband power, and bandwidth. This is called upper sideband. This is called lower sideband. This is called lower sideband. This is called upper sideband. Okay. My dear friends, y of t equal to what? M of t into CT. Let M of t equal to AM cos of omega mt. C of t equal to AC cos of omega CT. Then y of t equal to what? AM AC by 2 cos of omega CT plus omega mt plus cos of omega CT minus omega mt. Got it? Multiply with the 2 divided by the 2. Okay. This is your upper sideband. This is your lower sideband. There is no any carriers. Got it? So what is the power? So upper sideband power is equal to what? AM AC by 2 amplitude ka square divided by 2. This is AM square AC square divided by 8. So upper sideband power equal to what? Lower sideband power. So the total sideband power equal to what? Twice of AM square AC square by 8. And this is AM square AC square divided by 4. This is the total sideband power. Now, my dear friends, here this is AM. And here this is your AC. Got it? So this is your AC. This is your AM. So just write down here. So AM AC square by 2. This is 2√2 and 20√2. This is 2√2 cos square into 20√2 cos square divided by 8. This is 4 into 20 square into 4 divided by 8. And this is equal to 400 into 2. This is 800 watt. So total sideband power is what? Upper sideband plus lower sideband. This is equal to 1600 watt.
Efficiency always 100%. Bandwidth twice of FM. So this is 2 pi FM is what? Pi into 10 to the power 3. So 2 pi FM is pi into 10 to the power 3. So 2 FM is, so bandwidth is 1 kilohertz. Got it? So bandwidth is 1 kilohertz. Clear, my dear friends? Is it clear? चलिए बताइए, क्लियर है सबको? दक्षा, विधि, क्लियर है? गौरव, क्लियर? So this is your DSP-SC. Always 100% because total power, total sideband power is equal to total power. So efficiency is always 100%. Efficiency is always 100%. चलिए अब देखते हैं हम लोग जनरेशन मेथड, जनरेशन ऑफ DSP-SC. DSP-SC को हम किस किस मेथड से जनरेट कर सकते हैं, राइट? DSP-SC, देखिए there are two methods of generation of DSP-SC. First is balance modulator and second one is your ring modulator. First one is the balance modulator, second one is the ring modulator. So first is balance modulator. बैलेंस मॉड्यूलेटर में कुछ नहीं करना है, जस्ट एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल जो भी है आपके, दो एएम मॉड्यूलेटर से पास कीजिए. मान लिया एएम मॉड्यूलेटर 1 एंड दूसरा एएम मॉड्यूलेटर, दिस इज, इसको जस्ट पास कीजिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से मैसेज सिग्नल्स को, एंड जब पास करेंगे इसको 180 डिग्री से, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, and this is your AM modulator 2. Okay, and this is passes through a local oscillator AC into cos of omega CT, and this is added here. Let's say this is your SAM dash T, this is SAM dash double dash T, and this is your SDSBT. So M of T को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस ऑफ M of T, माइनस ऑफ M of T. ठीक है, so SAM dash T is what? This is AC into 1 plus K into M of T cos of omega CT. SAM double dash T is what? 180 degree shift, so AC into 1 minus K into M of T into cos of omega CT. So as DSB ST what? दोनों को आप subtract कीजिए, this one AC is cancel out and this becomes twice of AC into K MT into cos of omega CT. Okay, so AC into K, this is equal to, so got it? So this is called AC dash.
So this is the general equation of DSPSC. Is it clear, my dear friends? Please write clear or not. So this is the generation of DSPSC by using your balance modulator. किससे हम लोग कर रहे हैं ये आपका दोस्त बैलेंस मॉडुलेटर से. इसको बैलेंस मॉडुलेटर क्यों बोले? क्योंकि दो मॉडुलेटर यूज कर रहे हैं, मॉडुलेटर 1 मॉडुलेटर 2. एक में मैसेज सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई किए, एक में मैसेज सिग्नल 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ अप्लाई किए, इसलिए इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड मॉडुलेटर. बोलो बाबा, क्लियर सबको? नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिंग मॉडुलेटर. देखो नाम याद रखना गेट के लिए, ठीक है, लेकिन ईएस के लिए आपको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, इसलिए पूरा डिजाइन करके आपको डिटेल में बता रहा हूँ. रिंग मॉडुलेटर लिखिए. इन द रिंग मॉडुलेटर, in the ring modulator, in the ring modulator, four diodes are connected. Four diodes are connected in the form of ring. In the form of ring. Four diodes are connected in the form of ring. In the form of ring. Which is shown in the figure. Which is shown in the figure. Assume all diodes are ideal. Assume all diodes are ideal. Assume here all diodes are ideal. चलिए अब देखिए ध्यान से, ये सी ऑफ टी आपका है, ठीक है. अगर सी ऑफ टी पॉजिटिव होगा तो देखो D1 एंड ये पॉजिटिव रखे, ये नेगेटिव रखा, तो ये नेगेटिव रखते ही यहाँ पर देखो D1 एंड ये फॉरवर्ड बायस होंगे आपके, है ना. देखिए फॉर सी ऑफ टी इज पॉजिटिव, फॉर सी ऑफ टी इज पॉजिटिव, diode D1 and D2 in forward bias. Diode D1 and D2 is forward bias. And D3 and D4 reverse bias. ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, है ना. एंड फॉर सी ऑफ टी इज नेगेटिव, and for C of t is negative, and for C of t is negative, diode D3 and D4 forward biased, and D1 and D2 in reverse biased. D1 and D2 in reverse biased. So when C of t positive, DSBT is positive. When C of t is negative, DSBT is negative.
So let this is your m of t signal. This is your m of t, and let this is c of t. This is c of t. This is your c of t. Plus 1 volt. Let's say this is minus 1 volt. Then output looks like output of the graph looks like c of t is positive. So c of t is positive, then positive. This is positive. C of t is negative, then negative. Then this is negative. This is negative. Now this becomes positive. So again, this is m of t into c of t. Just multiply m of t into c of t. This is m of t. So when you multiply negative, positive, this becomes negative. Now this negative, negative, this becomes positive. This is your positive, this is positive, positive. This is graph of SDSP T. This is MT into CT. दोनों मल्टीप्लाई करना है सर, ठीक है? और इस तरह से ग्राफ आपका मिलता चला जाएगा. So this is the graph of ring modulator. Graph of DSP-SC by using ring modulator. Please write each and everyone. Clear or not? Got it? Chali. So this is your graph. Next one लिखिए. Demodulation of DSP signals. Demodulation of DSP signal है ना, बस सिंपल सा चीज है ये, फटाफट खत्म करना है. लिखिए. The demodulation of DSP signal is done by synchronous detector. Synchronous detector. Synchronous detector. और आपको पता है सिंक्रोनस डिटेक्टर में क्या करते हैं हम लोग? जो भी मैसेज सिग्नल है जिसको आप डिमोडुलेट करना चाह रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए कैरियर सिग्नल से, and after multiplier just passes through the low pass filter and you will get the output m of t. Okay, चलिए. मान लिया ये परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, तो मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा सर बताइए? ये आउटपुट बन जाएगा आपका AC स्क्वायर
m of t cos स्क्वायर ओमेगा ct। इसको आप जब लो पास फिल्टर से पास करेंगे, इसको लिख सकते हैं ac स्क्वायर m of t डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा ct। जब इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू 0। आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या हो जाएगा? देखिए, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज ac स्क्वायर बाय 2 इंटू m ऑफ t। क्लियर? और जब ac स्क्वायर बाई 2 इंटू m ऑफ t को अगर आप एक एम्पलीफायर से पास करेंगे, देन आपको मिल जाएगा मैसेज सिग्नल m ऑफ t। सो दिस इज योर DSP, दिस इज योर डीमॉड्यूलेशन। ये केस 1 ले लिया मैंने, फर्स्ट केस, जब लोकल ऑसिलेटर आपका परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। This is the case for the perfectly synchronized. Let's assume the second case if perfectly not synchronized. Okay. So this is the case of perfectly synchronized. Let the another case, case 2, if perfectly not synchronized. है ना? Then what will happen actually? M of t as DSP SLO। बताओ, परफेक्टली नॉट सिंक्रोनाइज मतलब क्या लेंगे आप? ये लोकल ऑसिलेटर क्या है आपका? AC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस 5 है। जब इसको पास करेंगे आप लो पास फिल्टर से, then you will get the output. Okay, so output, what will happen at output? This is becomes your AC square m of t by 2 into cos of omega ct into cos of omega ct plus 5. So this can be right here AC square by m of t divided by 2. This can be right here cos a plus b and cos a minus b. So this is cos of 2 omega ct plus 5 plus cos 5. Now its average value is 0. So output of low pass filter is what? AC square m of t by 2 into cos 5. Is it clear, my dear friends? Please write each and every one. Clear or not? Got it? चलिए, अब बताना दोस्त, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या हो गया सर आपका? AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर MT बाई 2 इंटू कॉस 5। अब बताइए, अगर 5 का वैल्यू 90 डिग्री आपने रखा तो आउटपुट क्या हो जाएगा सर आपका? आउटपुट इज 0 एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। लिखिए, इफ phi इक्वल टू 90 डिग्री, if phi equal to 90 degree, then output becomes 0. Output becomes 0. So it will be affected by, quadrature null effect. Quadrature null effect. Quadrature null effect. क्लियर विधि? चलिए, अब देखो क्या हुआ, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो गया, अफेक्टेड बाय किससे? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट से।
तो नॉर्मली देखो, नॉर्मली एएम में क्या था, नॉर्मली एएम में कैरियर पावर सप्रेस्ड कर दिया गया तो डीएसबीएससी बन गया। डीएसबीएससी में देखा गया बैंडविड्थ तो वही ले रहा है, लेकिन कैरियर पावर को सप्रेस्ड किए तो एफिशिएंसी 100% अचीव हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डीएसबीएससी का फिर से प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसका क्वाड्रेचर नल इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट अभी भी जनरेट हो रहा है। और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो जनरेट किया गया वो था आपका एसएसबी एससी। आया, मजा आया बुआ? क्लियर है? क्यों पढ़ रहे हैं हम, किस कारण से पढ़ रहे हैं, क्लियर हुआ क्या? क्यों आया एएम से डीएसबीएससी, और फिर क्यों आएगा डीएसबीएससी कौन से कौन सा एसएसबीएससी? गॉट इट? थैंक यू। चलिए एडवांटेज लिख लीजिए। हाँ ओके सौमिक, अच्छा रिपीट करूं? देखिए नॉर्मल एएम का क्या था, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल एएम का क्या था, एफिशिएंसी 33.33% ऑर्डिनरी एएम का। दूसरा बैंडविड्थ क्या था आपका, ट्वाइस ऑफ एफएम। तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था तो आया कौन सा, डीएसबीएससी। डीएसबीएससी में क्या हो गया, बैंडविड्थ तो कुछ नहीं हुआ, बैंडविड्थ अभी भी ट्वाइस ऑफ एफएम था, बट एफिशिएंसी कितना अचीव हो गया, 100%। बट ड्रॉबैक क्या आया, ड्रॉबैक आ गया क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब इसको दूर करना है तो आया कौन सा, एसएसबीएससी। एसएसबीएससी क्या करेगा, बैंडविड्थ भी सेव कर लिया एफएम के इक्वल, एफिशिएंसी तो 100% रहेगा ही रहेगा, एंड जो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट है इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। क्लियर है क्या? इसलिए हम अभी आगे पढ़ेंगे एसएसबीएससी। गॉट इट? क्लियर सौमिक? क्लियर है बेटा? चलिए लिखिए एडवांटेज ऑफ डीएसबीएससी। डीएसबीएससी के क्या क्या एडवांटेज है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ट्रांसमीटर पावर विल बी सेव्ड। ट्रांसमीटर पावर विल बी सेव्ड, दैट इज एफिशिएंसी 100%। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ये एडवांटेज थे आपके। डिसएडवांटेज क्या थे सर, डीमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, डीमॉड्यूलेशन इज कॉम्प्लेक्स। दूसरा, हाई ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ अभी भी ट्वाइस ऑफ एफएम था। तीसरा, अफेक्टेड बाय क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ये आपके डिसएडवांटेज थे, ये आपके क्या थे, डिसएडवांटेज थे। और इसी को दूर करने के लिए आया कौन सा, एसएसबीएससी। क्लियर बेटा? प्लीज राइट ईच एंड एवरीवन, क्लियर और नॉट? ओके, गॉट इट? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा जनरेट करेंगे, एसएसपीएस। लिखिए एसएसपीएससी, लिखो द एडवांटेज ऑफ एसएसबी ओवर एएम एंड डीएसबी इज, the advantage of SSB over AM and DSB is both transmitter power and bandwidth will be saved. Both transmitter power and bandwidth will be saved. Again, I am repeating. The advantage of SSB over AM and DSB is both the transmitter power saved and bandwidth will be saved. Bandwidth will be saved. Right, next point. The demodulation of SSB
Next point, the demodulation of SSB is also done by synchronous detector. Synchronous detector. Next point. Next point. In SSB compared to DSB, in SSB compared to DSB, 50% of transmission bandwidth and power saved. 50% of transmission bandwidth and power saved. So general equation of SSB-SC is general equation of SSB-SC is AM/AC by 2 cos of omega CT plus minus omega MT, where plus for upper sideband, minus for lower sideband. So SSB-ST can be right here AM/AC by 2. This is cos of omega CT into cos of omega MT. This is minus plus sine of omega CT into sine of omega MT. Minus for here upper sideband and plus for here lower sideband, because यहाँ प्लस है तो यहाँ ब्रेक होके क्या हो जाएगा माइनस। चलिए सेकंड वाले में लॉगिन हो जाइए फटाफट लिखने के बाद।